these things. We'll start from scratch. So when you start with a fresh spool, okay? What you're going to do is you have to make sure that the tip is perfect, otherwise it won't go in. So you use this, you simply put this inside, chip it off. Okay. You always chip it at an angle. ठीक हो गया? ठीक है. You simply open this nut. Remove this. Okay. ठीक हो गया? Just hand tight it. Okay. Now this has notches cut in it. Yeah. ठीक है? So आप लोग चप्पल या कुछ पहने आप लोग या इसको छुइएगा नहीं, ये अर्थ देता है. ठीक है. Okay. So now this goes over here. ठीक है. Slide it in. Yeah. ठीक हो गया. Notches stays up or down? It doesn't matter. Okay. It's all the way. All the way. Okay. चारों बराबर हैं यानी कि. हाँ नहीं दो slides हैं basically. It's slide. सही. ठीक है. Generally, आइडियली स्पूल इसके ऊपर लगा के इसको खोलना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज यू लूजन इट अप. Okay. Now it comes with a filter, okay, which is basically cotton or alcohol swabs. ठीक है. ये वाला जो होता है. ठीक है. The objective is कि the filament, if you keep it in an envelope or something, ठीक है, dust आएगा उसके साथ. ठीक है. So ये while it's printing, the dust will get trapped here, so it won't go inside. ठीक हो गया. अच्छा. फिलहाल इसको हम कर देते हैं इधर. ओके. पावर कॉर्ड लग गई. ठीक है. अच्छा. Now once you switch it on, and now this is the switch right here. ठीक है. ठीक है. This is the power LED. ये आपका बूट हो जाता है. ठीक है. Now it's ready to operate. Right. Now once the machine is on, now you need to insert the filament. There are two ways of inserting the filament. One is auto loading, okay? The other is manual. I generally do it manually, okay? You need to straighten the filament up a bit, okay? And just push it inside. You see this hole right here, okay? Push it inside, and you can actually push this slightly. There's a movement. So this basically allows you to feeds it in. Yeah, it feeds it in. Okay. Okay. Now, if you don't want to manually feed it for children and all, okay. Basically, मैं manual feeding इसलिए कर रहा था क्योंकि it's faster that way. Okay. अच्छा. Now, if you want to, let's say, feed it using this, you simply go into the menu. Okay. You go into change eye string. Okay. You go into load eye string and preheat eye string. It's self-discriminatory. So basically the head Inside. will go up. Yeah. It will start heating to a predestined temperature. Which is 225 Which degrees. is 225 degrees. Wow. And then it will start beeping. Okay. Okay. Once it's heated up, it will start beeping. Once it starts beeping, you just need to pull the filament there and it will load it. Okay? So generally for the kids, even when my wife, she was printing the pieces and all, that's the easier way. So that's what is recommended for the user. I want to see how exactly it's going to feed it in. It will start beeping
and then you just need to make sure that it's chipped off. Okay, it's straightened to only like 2 inches Couple or of so. inches, yeah. That's it. It's a very powerful machine. You know, Tanvi, the beauty of it is, ठीक है. ठीक है. So once we load कर लेते हैं पहले. Okay. फिर then you know, 3D printing and ठीक है. And I think another thing what we can do, अभी आया है मेरे ध्यान में डॉक्टर. देखो मैंने सिर्फ इसको रखा था यहाँ. Yes. Okay. And it just went in. It's actually going in. It's feeding it. It's feeding it. Okay. Now you have to make sure it's not tangled up before the start of the print. Okay. That's it. Now it's good. अच्छा अब ये देखो ये यहाँ से Yes, I can see that this is loading. ठीक है. अब ये पूछ रहे हैं कि अगर तो फिलामेंट नहीं आया या let's say you're changing colors, right? So you would want to change so that फिलामेंट का जो ब्लेंड है ना वो सही आ जाए. तो आपने थोड़ा सा और पर्च किया ऐसे till it starts. ये देखो आया. Yes, it's purging now, yeah. ठीक है. Okay. Now generally for the user I don't recommend taking it out, but I usually do take it out just like this. It's not that hot, but of course you don't want to touch the nozzle. So that's इतना पीछे है वो कि वहाँ तक हाथ नहीं जाता. And then you simply continue. So basically, you know, वो देखो filament निकाल रहा है वो already, but that doesn't matter. ठीक है? Okay. So now it's basically loaded the filament. So you can leave it while you can switch it off. You can leave it like this. It's up to you. So let's say कि हमने जी इसको load करके हमने जी off कर दिया इसको. Okay. Right? Ideally, you should not switch it off like this, but just for the heck of it. Okay. Now let's say you want to start printing a model. Okay, you simply go to TeenyFactory.com, or you can go to ideas.TeenyFactory.com. Okay. Now these are some pre-made models. Wow. I love it. Let's say we want to print calibration, or let's say we want to print a keychain. ठीक है, we've loaded a number of models here. कि बहुत सारी keychains आ रही हैं इसके अंदर. ठीक है. Let's say we want to print this. Okay. So it basically gives you the preview. ठीक है. कि किस तरह का होगा, and you simply download. Okay. ठीक है. It gives you the zip file. Simply unzip. Now this is the file that you actually need to Upload on the here. SD card. Okay. So you use this adapter that's provided. हमने SD card लगाया. Very nice. Like a USB keychain. Yeah. A USB key. ठीक है. अच्छा, by default the SD card already has these files. I'm going to explain what these files are. So for the first batch already has a number of models. Like ये वाला मॉडल होगा इसके अंदर. ठीक है. इसके अंदर नॉब का मॉडल है. Okay. ठीक है. इसके अंदर एक calibration cube है. Remember I showed you those Yes, cubes? yes. So you can print the calibration cubes. Okay. So we're just gonna copy it over here. ठीक है. यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने रूट में पेस्ट कर दिया. ठीक है. ठीक है. ठीक है. इजेक्ट किया आपने, निकाल लिया. Simply insert it into the. तो ये काम हम सिंपली USB से नहीं कर सकते? नहीं, USB से नहीं कर सकते. Okay. Just the SD card slot for now. ठीक है. Because the microcontroller is so primitive, it does not support USB. Okay. Okay. Simply आपने SD card यहाँ डाला. ठीक है. इसने आपको बता दिया media insert है. Okay. Now you simply go to hatch from media. Now this is how you navigate up and down, right? So you hatch from media. Now you will have all the folders here. Okay? So you can even go to the first hatch folder, and then you'll have the candy bowl, you have a barrel, you have a knob. In our case, we'll go back to hatch from media. Okay, right here. ठीक हो गया. And then hatch. Self-explanatory. That's all it is. Yeah. That's all there is. Isn't it? Yeah, that's it. And okay. Now back to the website.
Now it'll do its thing. It'll start heating the bed, okay, to 110 degrees. So that's a lot. Okay. Water boils at 100 degrees, right? So you don't want to touch the build plate, okay, while it's printing. Okay. All right. But I want you to record while it's printing. Okay. So let's go back to the website. Now on the website, you go to the hatchery section. Okay, you'll also have the manual or वो तमाम चीज़ें on the SD card. ठीक है. You go to the website. You simply go to the documentation. ठीक है. You can download a user manual. Okay. ठीक है. Which is a PDF simple manual. There is a newer update of the manual coming up. ठीक है. Which has troubleshooting also for advanced users. Okay. So it just simply takes you through some safety features. ठीक है. Then how do you need to trim the filament, the use of the filament filter, what you get inside the box. Okay, now this is the front lid, simply opens up, closes, right? Knob आ गया आपका. Okay, SD card slot. I-string inlet आ गया, power. Okay, this is self-explanatory. Okay, now if you want to really get into it, this is basically the hot end temperature जहाँ से वो filament पिघलता है नीचे जाता है. ठीक है. Usually when it reaches 110, it will start heating this up. ठीक है. अच्छा, this is X, Y and Z. So this axis is the X axis and then this is the Y axis and then this is the Z axis. तो ये उसकी position बता रहा है in millimeters. ठीक हो गया. This is basically the feed rate, the speed at which the machine is running. So that's 100%. I don't usually change it. I don't recommend changing it. You can slow it down if there are certain models like this, where it's moving from here to here. So you would want to print this part slow, fast, and then this part slow, right? So you can reduce the feed rate manually. And then this is your percentage. जब SD card से print करते हो तो percentage बताता रहता है कितना percent It's at रहता है. 108 now. This is basically the elapsed time, so already 2 minutes has gone. Okay, this is the status section, so it's basically heating up the extruder now, right? The hot end. So initially it was showing bed heating, ठीक है. अब eventually इसके बाद शायद ये printing दिखाएगा. अच्छा, ये आपको बता देता है कि menus का general description क्या है, not taken into the detail कि configuration के अंदर कौन-कौन सी वो चीज़ें, वो detail में आप बता सकते हैं बाद में. ओके, ये ब्रैकेट तो आपको असेंबल करके मैंने दे दिया. जनरली आप सिर्फ नट खोल के दूसरा सिंपली असेंबल. ओके. ओके, अच्छा, फर्स्ट हैच का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप या तो इसके अपने SD कार्ड से प्रिंट कर लें या हमारी वेबसाइट से जाकर प्रिंट कर लें. I love it. ठीक हो गया. दिस इज फॉर बेसिक. ओह सॉरी, मैंने ये बंद कर दिया. ओके, hatchery dot no. अच्छा, एक इसके अंदर the advantage is if you're comfortable, just to start off कि आप घर लेकर गए, आपने किसी को डेमो कराना है तो आपने ये प्रिंट कर लिया या वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर लिया. The true power is basically if you're basically downloading any model or making your own models. ठीक है. For example, ये भी 3D printed है ना, सारी चीज़ें. तो ये हमने खुद डिज़ाइन की और फिर प्रिंट करी हैं. So let's say you want to print a model from any other website. So there's a software that comes packaged with the SD card. Okay, it's open source. You can go to the hatchery section, again documentation, and then picture guide. All these documents are also available on the SD card. Okay. तो ये आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाता है कि आपने किस तरह से कोई भी मॉडल उठा के अच्छा, ये प्रोफाइल है हमारे प्रिंटर की, स्पेसिफिकली किस तरह से लोड करनी है वो तरीका बताएगा. हाँ, यू कैन स्टार्ट विद द प्रिंट. और ये कितना टाइम लेगा? दिस वन उसके ऊपर एस्टिमेटेड टाइम कुछ. और अगर इस दौरान लाइट चली जाए तो इट्स गॉन. गॉन.
नहीं मतलब इसकी कोई मेमोरी मतलब दोबारा उस पर नहीं करता काम हुआ रिज्यूम नहीं करता. ठीक There is a feature that I'm testing on my machine, which is the same machine. So probably like 3 months down the line, it'll have resume. हाँ गुड मतलब तुम्हारी मशीन इस वक्त लेटेस्ट मशीन होगी, जितनी भी मशीन अभी तक शिप हुई है ना, क्योंकि फर्मवेयर चेंज हो गया, प्रोफाइल चेंज हो गई है. बिल्कुल ऐसा और इसके पीछे वो जो क्या कहते हैं कटे जो लगी हुई जो जिससे Filament. वो कितने की कॉस्ट करती है यार हम लोग सेल कर रहे हैं 4200 की. 4200 You can buy it as low as 3200. 1000 हाँ. और उसमें से क्या उसका रनवे एक एक फिलामेंट Oh, it'll last you like crazy, man. Why? Because it weighs nothing, na. It hardly weighs. Even ये model जो है, it's hollow from inside. It's not completely filled. ये ब्लू कहाँ से आया? I have blue now. Oh, okay, okay, okay. I have blue. I'll give you a choice of 2 filaments now for the same price. So you can take any of the colors that I have. ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास. मतलब मल्टीपल कलर्स में कोई चीज़ नहीं बनाएगा सिंगल कलर में नहीं बनाएगा हाँ, मल्टीपल कलर्स के लिए अगेन देयर इज अ मल्टी मटेरियल यूनिट that you add on to this machine and you feed in 6 materials at the same time. So it basically splices all the materials together. ये ऊपर से देखें सर्कल बना रहा है वो. किचन का पूरा वो @ हाँ. अच्छा वैसे इसमें टाइम होना चाहिए कि रिमेनिंग टाइम जो हाँ, है रिमेनिंग टाइम इसके अंदर आपके जो वेबसाइट में मॉडल्स हैं ना उनके तो आ रहे हैं. अच्छा क्योंकि इट्स अगेन एन एस्टिमेट. There is no printer that can give you an accurate depiction of क्योंकि मुझे पता चले मैं कितनी देर मतलब उसको डिस्प्ले लगा रहा डिस्प्ले हूँ की बात कर रहे हैं. हाँ, डिस्प्ले पे we can do that. हाँ Future. क्योंकि अगर मैंने अभी प्रिंट पे लगाया और मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मुझे ये नहीं पता चलेगा अभी इसमें कितना टाइम लग रहा है. एक ये फीचर हो तो ज़्यादा पता मुझे आधा घंटा लगेगा 15 मिनट लगेंगे. Yeah, that's future iteration. No? These are the feedback. This is wonderful. Look at this. देखिए हमारे जितने भी मॉडल्स हैं ना उन पे टाइम मिल जाएगा आपको. This is a 50-minute print plus minus. 1 आवर तकरीबन तो हो जाएगा ना. अच्छा, ये आपको इसकी डायमेंशंस भी बता रहा होता है. अच्छा, इसका ये देखना, ये सारी चीज़ें अगेन इट डिपेंड्स. दिस इज अगेन 3D printed. ऐसे ही. So most of the parts are 3D printed on this machine. The filter itself is 3D printed. So models, okay, now अगर आपने let's say मॉडल जो है मुख्तलिफ रिपोजिटरीज हैं. थिंगीवर्स के नाम से है, ठीक है, प्रिंटेबल्स के नाम से है, प्रूसा की. और इस पे कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो जो होगा इसमें जो है जी कोड चलता है. जी कोड ही चलता है. ठीक है वो किसी भी वेबसाइट से हमें मिल जाए जी कोड होगा तो ये उठा नहीं, आपको बेसिकली मॉडल लेना पड़ता है इन एनी 3D फॉर्मेट. ओके ठीक है. फॉर एग्जांपल आई विल ओपन और ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है? मैक्सिमम 240 वॉट्स. 240 वाट्स. क्योंकि जितनी हीट हो रहा है तो लेकिन ये जो इसमें हीटिंग कंपोनेंट्स है ना, जो बेड है इट टेक्स 2.6 एम्पियर इन 12, so that's roughly 30 watts. Okay? So the bed takes 30 watts, the hot end takes 12 into 1, so 12 watts. So ये basically आपकी power consumption है heating components की, right? The major power is basically consumed by the motors, so it has like 6 motors that run it. So that basically Look takes. at the progress in the print. yeah. So ये out of the box आपको मिलेंगे. Okay, let's say
डॉक्टर साहब ने वीडियो गिफ्ट लिया था, फिर भूल के आ गए। वो टेबल भी दे दो तो हाँ। भिजवा देंगे। कौन सी वेबसाइट है? MakerBoard is a company that makes 3D printers. Okay. And this platform is run by them. So it's basically where we are at, 10 years or maybe 5 years down the line. ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर कीजिएगा ना, ये जो लिंक्स वगैरह है ना। Now let's say you download a model from here. Okay? Now this model was downloaded from this website. Good. इसी स्लाइस करके क्यों ना दिखा दूँगा। Downloads, dragon. ठीक है, so this is the model, ये जो डाउनलोड किया हुआ है ना। ठीक है। Now this is basically an STL file. STL file. ठीक है। Now you can download STL files, you can download AMF files, ठीक है, you can download 3MF files. So there are a number of models that work. ठीक है। अच्छा, ये आपने let's say ये ड्रैग कर लिया, आप सिंपली ये सॉफ्टवेयर खोल के सुपर स्लाइसर, ठीक है, ये उसके अंदर SD कार्ड में अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, अब नाउ इट्स बिगर देन द बेड साइज, द डायमेंशंस ऑफ द मशीन, दैट्स व्हाई इट्स रेड, ठीक है, एंड इट्स आल्सो गिविंग यू एन एरर ओवर हियर। नाउ यू सेलेक्ट इट एंड यू कैन बेसिकली चेंज द डायमेंशंस फ्रॉम हियर, ठीक है। सो मुझे पता है आपकी जो मशीन है वो 90 by 90 by 90 है, ठीक है, मिलीमीटर्स। तो लेट्स से मैं इसको जो है 147 है ना, इसको 90 कर देता हूँ, तो ये देखो फॉरेन ग्रीन हो गया। वाओ, ओके। ग्रीन हो गया, दिखाओ। Right? Now it's within the bounds of the machine. Now once this is done, what the user does is simply go to G code and अच्छा, ये भी already predefined profiles हैं इसी मशीन की। Good. जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी प्रीडिफाइंड। हाँ, प्रीडिफाइन करके डाल दिए हैं, क्योंकि हर मशीन की डिफरेंट होती है, तो ये हमारी मशीन की है। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, राइट? So now it gives you a preview of, you see how the dragon would print. ठीक है? Now as I was saying, this dragon is basically hollow from the inside. It's hollow from the inside. I love it. Right? So यहाँ पे ये आपको बता रहा है 2 घंटे लगेंगे इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल्स हैचरी की लोड हुई हुई हैं, तमाम चीज़ें। If you want to go into the details of the settings, you're more than welcome. Right? So I usually keep it at expert. I go to different, but I don't usually change. I don't recommend that you do this. ठीक है? So कोई भी मॉडल आपने लेना है, सिंपली आपने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपली साइज चेंज होना जरूरी है हमारी मशीन के हिसाब से, अपनी मशीन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, राइट? और फॉर्मेट चेंज करना होगा हमें। नहीं, फॉर्मेट तो आप जब STL यूज हो जाएगा। हाँ, वो बताएं फॉर्मेट किया ना। लेट्स से आपने स्लाइस किया, ठीक है, इसको सेंटर कर लिया। इट्स ऑलरेडी गिविंग यू G कोड। सो इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि 3D मॉडल को स्लाइस करके G कोड में कन्वर्ट कर देगा। G कोड आपने सिंपली SD कार्ड पे करना है। अगेन ये तमाम चीज़ें इस मैनुअल में मेंशन्ड हैं। गुड, ठीक है, कि आपने किस तरह से मॉडल जो है वो लोड करना है। लेट्स से ये मॉडल आपने लोड किया, ठीक है, आपने यहाँ से रिसाइज किया उसे, ठीक है, एंड देन यू सिंपली स्लाइस एंड देन इट गिव्स यू द स्लाइस्ड वर्जन, यू सिंपली एक्सपोर्ट इट। सो देयर इज अ सिंपल मैनुअल। ओके। और बोले आपको ब्लॉग भी बनवा दिया भाई। इसकी जो है ना, इसकी वीडियो बना के इसकी एडिटिंग करवा लेंगे। एडिटिंग करवा के अच्छे से ना एक ट्यूटोरियल सॉर्ट ऑफ आपका आ गया, और एक ये देखिए ना, ऊपर 3 मशीन है हमारी, 2 मशीन लाइव है, 1 मशीन नीचे चल रही है।
And whatever you do, don't experiment with the material. If you want to experiment with the material, send me the material info. If I tell you that you can use it in the machine, then use it. Otherwise, you'll end up screwing up the machine. अरे नहीं वो तो आप ही Wow, this is beautiful. तुम निकाल लो. पूरी प्लेट निकलेगी क्या? नहीं उठाओ खींचो. थोड़ा सा जो है चिपका हुआ है. Doesn't matter. Pull it out. I don't want to use a lot of force. देखें Wow. This is yours. This is yours. Good. Just printed now. Very good. Love it. And look how clean the entire thing is. You don't even have to do anything. हो गया. बिल्कुल क्लीन है. अच्छा, जनरली बेड को क्लीन करने के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ, यूज दैट अल्कोहल स्वैब. हाँ अमी, जो मैंने आपको बताया था ना, दिस वन. Yes. ठीक है. You simply open it up. ठीक है. It doesn't matter. Even if it is switched on, you don't need to clean it anytime, every time. Okay. Right? मैं तो 100 साल भी चलता है, नहीं चिप करता. वरना आपने इसको सिंपली किया. ऐसे. गुड. तेरे से और बोले. ये अमीन का गिफ्ट है. ठीक हो गया. Thank you, इसको Amit. ऑफ कर दें यहाँ से. इसको हमने बाहर निकाल दिया. ठीक है. दिस इज योर मशीन लाइक दिस. तैयार, रेडी टू. Just like a desktop. I don't think you'll need anything else, inshallah. That's wonderful. And you can always call me.